Hello everyone, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. My name is Vibhati Jain and in today's session I will discuss rotational motion PYQ part 1. Right, so let's start with the session guys, but before that you are on Infinity Learn NEET, so subscribe करो फटाफट से अपने चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें. Right, so let's start with IEL free master classes for you guys. इसके जो फीचर्स हैं, दिस फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फ्री मास्टर क्लास आपको मिलेगी, उसके साथ 1 इन्फिनिटी लर्न टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, 2 फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे और साथ ही साथ बच्चों 14 फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे. तो आईएल फ्री मास्टर क्लासेस के लिए कैसे रजिस्टर करना है उसका जो लिंक है दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लिंक पे जाओ, क्लिक करो और खुद को रजिस्टर करो. So let's start with question number 1 guys. Question number 1 was in NEET 2020 paper. Question is, find the torque about the origin when a force F vector is 3 j cap Newton acts on a particle whose position vector R vector is 2 k cap meter. ठीक है, F vector दे रखा है, R vector दे रखा है और आपसे क्या पूछा है कि टॉर्क बताओ. राइट, so this was in 2020 paper बच्चों, this was in 2020 paper. Torque vector is equal to R cross F. What is R? R is 2k cap cross F. F is 3j cap. तो ये हो जाएगा 6k cross j. K cross k is minus I, so this is 6 minus I cap और -6 I cap न्यूटन इंटू मीटर. तो ये आपका आ जाएगा टॉर्क, दैट इज -6 I cap न्यूटन इंटू मीटर, विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. द मोमेंट ऑफ फोर्स F is 4 I cap 5 j cap -6 k cap at 2 0 -3 about the point 2 -2 is given by. तो सबसे पहले R वेक्टर निकालते हैं. किस पॉइंट पे निकालना है? इस पॉइंट पे, इसके अबाउट. तो ये आपका हो जाएगा R2 वेक्टर और ये आपका हो जाएगा R1 वेक्टर. तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करोगे तो you'll get your R वेक्टर and R वेक्टर is 2 -2 I cap plus 0 minus of -2 that is +2 J cap plus -3 minus of -2 +2 K cap. तो ये आपका आ जाएगा 0 I cap प्लस 2 J cap माइनस K cap. ये आपका आ गया R वेक्टर. 0 I cap प्लस 2 J cap माइनस K cap. राइट, सो यहाँ से अगर मैं R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? टॉर्क वेक्टर. राइट, सो दिस इज I cap, J cap, K cap प्लस माइनस प्लस R वेक्टर का कोफिशिएंट 0 2 -1, 0 2 -1 एंड F वेक्टर का कोफिशिएंट 4 5. हेलो सविता, गुड आफ्टरनून बेटा. 4 5 -6. ठीक है, दिस इज 4 5 -6. सो दिस विल बी I cap coefficient is 2 into 6, that is 2 into -6 -12 minus of 5 into -1, that is -5. Then we have minus J cap. So this is 0 into -6 0 minus of 4 into -1, that is -4. So minus minus plus 4. And then we have plus K cap का coefficient. So this is 5 into 0 0 minus 4 into 2 8. ठीक है. So this is I cap -12 plus 5 minus J cap into 4 plus K cap with -8. Right. So over here option D, well done beta. Over here it is -7 I cap -4 J cap and -8 K cap. Right, so -7 I cap -4 J cap -8 K cap is the correct answer, which is option D. Well done everyone. Okay, now let's start with the third question. It was in 2015 paper. A force vector F is equals to alpha I cap plus 3j cap plus 6k cap is acting at a point R 2 I cap minus 6j cap minus 12k cap. The value of alpha for which angular momentum about the origin is conserved.
what should be the value of alpha? For that, angular momentum about the origin is conserved or constant. ठीक है. So guys, for conservation of angular momentum, net torque should be 0. So find r cross f first and put it equal to 0 vector, right? So you'll get the value of alpha. Okay, so try this one everyone. चलो फटाफट से try this one. क्या होगा? R is 2i cap minus 6j cap minus 12k cap. ठीक है, so find torque first. Plus minus plus 2 minus 6 minus 12 and F is alpha 36. Alpha 36. Well done beta, well done. Well done Savita. So this is I cap coefficient. So this is 6 into minus 6 minus 36 minus 3 into minus 12, that is again minus 36. Then we have minus j cap. So this is 2, right? This is 2, yeah. Okay, so this is 6 into 2, 12 minus alpha into minus 12. So this is minus 12 alpha and plus k cap. So this is 3 into 2, 6 minus alpha into minus 6 is minus 6 alpha. ठीक है? So this will give you what? This is I cap minus 36 plus 36 and this is minus j cap 12 plus 12 alpha and plus k cap. So this is 6 plus 6 alpha. Okay? तो ये आ जाएगा 0 I cap minus 12 plus 12 alpha j cap plus 6 plus 6 alpha k cap. ठीक है. Now अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. मतलब ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट दोनों 0 के बराबर होने चाहिए. मतलब 12 plus 12 alpha is 0 or alpha is minus 1. Similarly, if 6 plus 6 alpha is 0, then again alpha is what? Minus 1, right? So using these two conditions, we are getting the same value of alpha, that is minus 1, which is option C. Well done everyone, well done. I hope this is clear guys. चलो बहुत ही बढ़िया. Now let's try this one. This was in 2015 cancelled paper. A mass m moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v naught at a radius r naught. ठीक है, मास m है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है विद टेंजेंशियल स्पीड v नॉट, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज v नॉट. ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज r नॉट. अब हमने क्या करा, इस मास को स्ट्रिंग से अटैच कर दिया और स्ट्रिंग को ऐसे नीचे पुल करते गए. स्ट्रिंग को नीचे पुल करते गए तो जो रेडियस है वो इस सर्कल का ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा और आफ्टर अ सर्टेन टाइम द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच दिस मास इज मूविंग बिकम्स r नॉट बाई 2. ठीक है, फाइन. आपको बताना है व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, ट्राई दिस वन. जैसे आप स्ट्रिंग को पुल करोगे, मास का जो सर्कल है रोटेशन का, वो सर्कल का रेडियस विल डिक्रीज एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट बिकम्स r नॉट बाई 2. आपको बताना है व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन द मास इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r नॉट बाई 2. ट्राई दिस वन गाइस, ट्राई दिस वन. क्या होगा? Option A is 2 mv naught square, option B is half mv naught square, option C is mv naught square, and option D is 1 upon 4 mv naught square. Option A, well done, well done. So see, initially when it is moving in a circle of radius r naught, इसका जो angular momentum है वो हो जाएगा mv naught r naught. ठीक है, फिर जब इसका रेडियस डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होके r नॉट बाई 2 हो गया, तो उस केस में इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा बिकॉज नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज 0.
तो इस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, राइट. सो दिस इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. सो लेट्स से इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r0/2 इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. तो ये हो जाएगा m v r0/2. m कैंसिल, r0 कैंसिल, सो v इज इक्वल्स टू 2v0. ठीक है. तो अगर इसका रेडियस r0/2 हो गया तो इसका जो वेलोसिटी है वो 2v0 हो जाएगा, राइट. सो न्यू वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर एंड दैट इज हाफ m v स्क्वायर, मतलब 2v0 का स्क्वायर. ठीक है. तो ये हो जाएगा हाफ m इंटू 4v0 का स्क्वायर, 2 कैंसिल, so this is 2mv0 square. So this is the new value of kinetic energy, that is 2mv0 square. Well done beta, well done. Option A is correct. Well done. Well done Savita. Okay, next is this one. It was in 2012 paper. When a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along. Mass जो है वो एक प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है. क्या करता है, रोटेट करता है. आपको बताना है इस मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा. Along the line perpendicular to the plane of rotation, along the line making an angle of 45 degree to the plane of rotation, along the radius or along the tangent to the orbit. Okay, try this one guys, try this one. Option A, well done, well done. So angular momentum is r vector cross p vector. Angular momentum is r vector cross p vector, right. So this is in the direction of r cross p. So about this point, this is the direction of r vector, this is the direction of p vector, so this is direction of p vector. P vector is in the direction of v vector, right. So r cross p karo bachcho, r cross p using right hand rule, r cross p. So this is into the plane is perpendicular to the plane of rotation, right. So angular momentum is directed along a line perpendicular to the plane of rotation, which is option A. Well done guys, well done. चलो बहुत ही बढ़िया. Next is this one. Which of the following statements are correct? Okay, so I'll explain the statements one by one. Try this one guys. First is center of mass of a body always coincides with the center of gravity of the body. Second statement is center of mass of the body is the point at which the total gravitational torque on the body is 0. Third point is a couple on a body produces both a translational and rotational motion in a body. And fourth is mechanical advantage greater than 1 means the small effort can be used to lift a large load. Okay, try this one guys. Read these options carefully, then try to answer. Center of mass of a body is the point where total mass of the body is assumed to be concentrated. If any external force is acting on the center of mass of the body, its torque about the center of mass will be 0. ठीक है. Whereas center of gravity is the point where net torque of gravitational force on the body becomes 0. So they do not coincide always. They may or may not coincide. So this is not true. ठीक है. Center of mass of the body about which the total gravitational torque of the body is 0. No, this is the center of gravity. A couple is equal and opposite force but acting along two different lines. So this is net force 0, net force is 0, that means it cannot produce translational motion, right, but it can produce torque, right, so it can produce rotational motion. So this statement is again wrong. It can only produce rotational motion, not translational motion.
Fourth one is mechanical advantage greater than 1 means the small effort can be used to lift a large load, right? So in this case, mechanical advantage is output force divided by input force. If it is greater than 1, that means output force is greater than input force, right? So this one is true. If output force is greater than input force, that means mechanical advantage is greater than 1, and in that case small forces can be used to produce large effects, right? So correct answer is option D, 4 only. First 3 statements are incorrect. Well done guys, well done. Next is this one. A rod of weight W is suspended by 2 parallel knife edges A and B and it is in equilibrium in a horizontal position. Rod, this is A, B and this is supported by these 2 parallel knives. Okay, and yeah, it is in equilibrium position. The knives are at a distance D. The separation between these 2 is D. The center of mass of the rod is at a distance x from A. So at a distance x from A, center of mass of the rod is there. The normal reaction on A is, what is the normal reaction on A? Let's assume that this is Na and this is Nb. So what is the value of Na? Normal reaction provided by this A knife at this particular point. Okay, try this one guys, try this one. We have which option everyone? कौन सा ऑप्शन सही होगा? Option A, well done, well done. Let's solve this question here guys, let's solve this question here. This is a rod, this is A and this is B. So this is NA and this is NB and this total separation is D and this is W, that is weight, and this separation is X. So this remaining separation is D minus X. ठीक है, अगर हमें पता करना है कि what is the value of Na and this rod is in equilibrium, that means what? The net torque about this 3 points will be 0. इक्विलिब्रियम है तो इसको पकड़ के इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दो. ठीक है, तो इसका जो टॉर्क होगा r क्रॉस f आउटसाइड होगा एंड दैट इज w इंटू डी माइनस एक्स. ठीक है, और इसका जो टॉर्क होगा r क्रॉस f इनसाइड. ठीक है, सो बेसिकली दिस टॉर्क w का टॉर्क शुड बी बैलेंस्ड बाय na का टॉर्क, राइट? सो दिस इज na इंटू डी, है ना? फोर्स इंटू perpendicular distance is d and na is the force. Fine. So यहाँ से सीधा सीधा आपका na आ जाएगा w d minus x divided by d. ठीक है, w d minus x divided by d. So correct answer is option A, right? Option A is correct बेटा. Oh no, option B, sorry. Option B. Well done guys, well done. ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया everyone. Let's start with this question. This was in 1998 as well as in 2012 paper. Question is, ABC is an equilateral triangle with O as its center. ठीक है, F1 vector, F2 vector and F3 vector represent 3 forces acting along the side AB, BC and AC respectively. Then the total torque about O is 0. Then the magnitude of F3 is. If total torque about O is 0, then what is the magnitude of F3? Try this one. चलो बच्चों, क्या होगा? If total torque about O is 0, option A, hello Raghavendra. Well done guys, well done. See, this is F1 vector ka direction and this is, let's say, x. Since this is an equilateral triangle, so its distance, the distance of this is x and x and x, है ना? Perpendicular distance from center to the side will be equal in all these 3 cases. ठीक है, तो यहाँ पे for F1 this is the direction of R cross F. इसका टॉर्क क्या होगा? आउटवर्ड.
torque of F1 is outward. Let's take outward as positive. So this is F1 into X. ठीक है. Similarly, for F2, this is R is downward. ठीक है. And R is downward and F is like this. So R cross F, torque of F2 is again outward. So it is again positive F2x, and this is F3. So for F3, this is the direction of R. So R cross F करने से इसका torque inward आएगा, and torque of F3 is minus F3x. It is inward, that is why I am putting it with negative sign. Now this total torque is 0. That means F1 plus F2 minus F3 into X should be 0. Right? That means F1 plus F2 minus F3 is equal to 0, or you can say that F3 is equal to F1 plus F2. F3 is equals to F1 plus F2. I hope this is clear, guys. So correct answer is option A. ठीक है? चलो, बहुत ही बढ़िया guys, बहुत ही बढ़िया. Well done everyone. Alright, now let's try this one. This was in NEET 2016 second paper, and this is something related to kinetic energy, right? Well done guys. Question is, a solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. Okay, this is solid sphere of mass m and radius r. It is rotating about its diameter. And we have a solid cylinder of same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis like this. Same mass, same radius. With an angular speed twice that of the sphere. अगर angular speed of sphere is omega, तो angular speed of cylinder is 2 omega. And this is solid sphere, right? Okay. The ratio of their kinetic energies of rotation, E sphere to E cylinder will be, what is the ratio of their kinetic energy of rotation, right? So kinetic energy of rotation is half I omega square, half I omega square. दोनों के half I omega square का क्या करना है? Ratio निकालना है. Try this one guys. I for solid sphere is 2 by 5 mr square. And I for solid cylinder is 1 by 2 mr square. ठीक है? चलो. Now try this one. क्या होगा guys? What is the correct answer? Option B from Savitha, well done. Chalo, let's see, let's solve it. We have a solid sphere, m mass, radius r, and omega is angular speed of rotation. So E sphere is half I. I for solid sphere is 2 by 5 m r square into omega square. Half I omega square. This is solid cylinder. M mass, radius r, and 2 omega is nothing but its angular speed of rotation. So E cylinder is half. I for cylinder is 1 by 2 mr square into omega square. तो ये हो जाएगा 2 omega का square, right? So this is 1 by 4 mr square into 4 omega square. 4 cancel, so this is mr square into omega square. ठीक है, यहाँ से देखो 2 cancel, so this is 1 by 5 mr square into omega square. ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा E sphere divided by E cylinder is equal to 1 by 5 mr square omega square divided by mr square omega square. Cancel, so ratio is 1 upon 5, right? 1:5 is the correct answer. Well done everyone. 1:5 is correct, right? Which is option B. Well done guys, well done. Okay, chalo, excellent. Now let's try this one. It was in 2016 second paper. Again very nice question. A light rod of length L and has two masses m1 and m2 attached to its two ends. So this is rod of length L
and it has two masses at its ends m1 and m2. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass of the rod, right? So let's say this is the center of mass of the rod और इसके about मुझे क्या बताना है, moment of inertia बताना है. Okay, try this one guys, try this one. क्या होगा everyone? What will be the answer guys? Option A from Savitha, well done, well done. Okay guys, so this is rod of length L, m1 mass, m2 mass, ठीक है. Let's say this is the location of center of mass, यहाँ पे ये center of mass है, and this is at a distance r1 and this is at a distance r2. So for two particle system हम m1 और m2 का center of mass से distance निकाल सकते हैं. कैसे? ये direct expression जो है वो आपको याद रखना है. r1 is m2l divided by m1 plus m2 and r2 is m1l divided by m1 plus m2. ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास में हम करते हैं. सीधा सीधा टू पार्टिकल सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास से m1 m2 का सेपरेशन ऐसे आता है. ठीक है, तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m2 अबाउट सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर इज m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर इज m1l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. तो यह आ जाएगा m1 m2 स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज m2 m1 स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो, m1 m2 l स्क्वायर कॉमन और साथ में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन. तो आपके पास क्या बचा, m2 प्लस m1, ये m2 प्लस m1 को इससे कैंसिल कर दो तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दैट इज m1 m2 l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट. सो दैट इज नथिंग बट ऑप्शन A. Fine, well done guys, well done. I hope this is clear. Any doubt so far बच्चों, any doubt, anything else? चलो कुछ भी डाउट हो बताओ यहाँ पे फटाफट से. Now next is this question. From a disc of radius capital R and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. Okay, एक डिस्क है m मास का r रेडियस का, इससे हमने सेंटर से पास होता हुआ एक होल बनाया एंड द डायमीटर ऑफ दिस होल इज इक्वल टू r. ठीक है, सो दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क. हमें बताना है what is the moment of inertia of this remaining portion of the disk. Okay, we want to find the moment of inertia of the remaining portion of the disk. ठीक है, कैसे करेंगे इसको, try this one बच्चों, फिर समझते हैं कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को. And axis about which we want to find the moment of inertia is this one, passing through center. Okay, ये अपना एक्सिस है. फाइन, ट्राई दिस वन. क्या होगा, चलो बच्चों, वेरी नाइस क्वेश्चन. इट वॉज इन 2016 फर्स्ट पेपर में था, ऑप्शन डी. वेल डन, वेल डन. Let's discuss this question बच्चों. So this is a complete disk of mass m radius r. ठीक है,
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर इज mr स्क्वायर बाई 2 परपेंडिकुलर टू इट, और अबाउट द सेंटर जो एक्सिस पास हो रही है दैट इज mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस डिस्क में से ये पोर्शन रिमूव कर दिया। सो अगर मैं पूरा एरिया देखूँ तो पाई आर स्क्वायर एरिया के पास m मास था, तो एक एरिया के पास कितना हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर मास। आपने जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका रेडियस r बाई 2 चला गया, जो रिमूव्ड पोर्शन है डिस्क का उसका मैंने डायमीटर r रखा, तो रेडियस क्या चला गया r बाई 2। तो अगर r बाई 2 रेडियस वाले डिस्क की बात करूँ तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई r बाई 2 का स्क्वायर दैट इज पाई r स्क्वायर बाई 4। तो एक एरिया का मास m अपॉन पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 एरिया का मास कितना हो जाएगा, एक एरिया का मास इंटू टोटल एरिया ऑफ द डिस्क विच इज पाई आर स्क्वायर बाई 4, राइट। सो दिस इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल तो आ जाएगा m अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से हमने m मास से अभी तक क्या पता चला, m मास से हमने m बाई 4 मास को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, फाइन। अब इसमें से जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका m बाई 4 मास है, उसका रेडियस r बाई 2 है, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है और ये सेंटर है बड़ी वाली डिस्क का। हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, रिमूव्ड पोर्शन I रिमूव्ड पता करेंगे। I रिमूव्ड क्या हो जाएगा, ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज mr स्क्वायर बाई 2, लेकिन इसका मास क्या है m बाई 4 r बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। mr स्क्वायर बाई 2 होता है, m यहाँ पे m बाई 4, r इसका जो रेडियस है दैट इज r बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस md स्क्वायर, क्योंकि मुझे इस एक्सिस के अबाउट नहीं पता करना, मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता करना है, ये वाली। तो इस एक्सिस के अबाउट पता करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर आप पता करोगे तो ये हो जाएगा ICM पता चल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। तो m इज m बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब सेपरेशन बिटवीन दिस टू एक्सिस इज r बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, तो दिस इज 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32। ये रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, सो रिमेनिंग पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I रिमेनिंग इज नथिंग बट I टोटल माइनस I रिमूव्ड। ठीक है, I टोटल कितना है mr स्क्वायर बाई 2 माइनस I रिमूव्ड इज 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 LCM, यह आ जाएगा 16mr स्क्वायर माइनस 3mr स्क्वायर। सो दिस इज 13mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32, 13mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। फाइन, 13mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो नाउ लेट्स ट्राई दिस वन फ्रॉम 2015 कैंसल्ड पेपर बच्चों। वी हैव 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स, मतलब ये हॉलो स्फीयर्स हैं, each of mass m and radius r, each of mass m and radius r are placed as shown in the figure. Consider an axis xx dash, ये आपकी एक्सिस है xx dash which is touching the two shells, इन दोनों शेल्स को यहाँ पे टच करती है, एंड फर्स्ट शेल को, अपर जो शेल है उसके डायमीटर के अलोंग पास करती है। फाइन, आपको बताना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस 3 स्फीयर सिस्टम, 3 स्फेरिकल सिस्टम अबाउट xx dash। क्या होगा, ट्राई दिस वन गाइस, ट्राई दिस वन। 16 अपॉन 5mr स्क्वायर, 4mr स्क्वायर, 11 अपॉन 5mr स्क्वायर, या फिर इट इज 3mr स्क्वायर। ठीक है, चलो ट्राई दिस वन।
ओके गाइस, व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए अपना आंसर? Moment of inertia of a hollow sphere about its diameter is 2 by 3 mr square. Option B from Savitha. Well done, well done. Let's discuss this one. So for this first sphere there is no problem क्योंकि एक्सिस सीधा इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डायरेक्ट पता है, दैट इज 2 by 3 mr square. प्रॉब्लम है सेकेंड और थर्ड स्फीयर का. सेकेंड स्फीयर से देखो एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, थर्ड स्फीयर से एक्सिस ऐसे पास हो रहा है. ठीक है, तो इस अबाउट दिस एक्सिस हमें क्या लगाना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है, सो इसके अबाउट तो मुझे पता है, इसके अबाउट आई मान लेते हैं. इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा? रेडियस के बराबर, राइट? सो इन दिस केस आई इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वेयर. आई सी एम क्या है? 2 by 3 mr स्क्वेयर प्लस एम डी स्क्वेयर इज एम आर स्क्वेयर. तो ये आपका आ जाएगा 5 by 3 mr स्क्वेयर. सिमिलरली फॉर दिस वन ICM 2 by 3 mr स्क्वेयर, MD स्क्वेयर mr स्क्वेयर हो जाएगा, और अगेन इसका भी क्या आ जाएगा? अबाउट x x डैश 5 by 3 mr स्क्वेयर. ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, राइट? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल इज 2 by 3 mr स्क्वेयर प्लस 5 by 3 mr स्क्वेयर प्लस 5 by 3 mr square. So that is 12 mr square by 3, that is equal to 4 mr square. ठीक है, 12 mr square by 3, that is 4 mr square, which is option B. I hope this is clear. Well done beta, well done. Okay, now let's try this one. The moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length L about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I naught. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक रॉड है मास m, लेंथ l. ठीक है, और एक एक्सिस है विच इज पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड इज I नॉट. ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? What is the moment of inertia about this axis? Okay, so this separation is L by 2. चलो बताओ फटाफट से क्या होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हो जाएगा बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हो जाएगा फटाफट से. What will be the answer? Guys, well done Savitha, well done beta. Look at this one. This is rod of mass m, length L. About this it is given as I naught, which is nothing but ICM, right? और ये मुझे पता करना है, तो I according to parallel axis theorem क्या हो जाएगा? I naught plus m d square. ठीक है, I naught is I naught, m is m, and the separation between these two axes is L by 2. So this is L by 2 का whole square. So this will be I naught plus m L square by 4. Right, so this is I naught plus ml square by 4, that is option B. Well done बच्चों, well done, well done. Okay, so guys again we have NEET rank assurance ultimate package for you. इसमें आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस मिलेंगी बहुत सारी, उसके साथ सेल्फ लर्न वीडियोस हैं, सेल्फ लर्न फ्लैश कार्ड्स हैं, अडेप्टिव प्रैक्टिस होगा, रैंक अश्योरेंस प्रोग्राम डेली टेस्ट आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ रैंक अश्योरेंस प्रोग्राम टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है, और साथ ही साथ अपने डाउट्स आप डाउट्स ऐप पे रिजॉल्व कर सकते हो. सो गो टू दिस लिंक गाइस, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और खुद को रजिस्टर कर दो फटाफट से रैप अल्टीमेट पैकेज के लिए, जहां पे आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट? एंड गाइस, इस सेशन के जो असाइनमेंट्स हैं, नोट्स हैं और डेली अपडेट्स हैं रिगार्डिंग एवरी सेशन, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके फटाफट से आप उसको ज्वाइन कर लो ताकि आप सारी अपडेट टाइमली लेते रहो. ठीक है, सो गाइज यू आर ऑन इन्फिनिटी लर्न नीट. फटाफट से आप इस सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, और अपने चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आप कोई भी सेशन मिस ना करने पाओ. राइट, सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन गाइज. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर, बाय गाइज एंड बाय बाय.